Hi, here comes the second topic, that is electromagnetic induction. Electromagnetic induction and Faraday's experiments. So that is topic number 2, 5.2 specifically. Actually ये जो EMI अकेले जो है ना, it's a very small one. इसलिए we are going for a combined lecture for both. Okay. So हम इसमें देखेंगे सबसे पहले what is electromagnetic induction. ठीक है. So इसके लिए I am going to take one coil. Fine. इस coil के associated I will be connecting a galvanometer. A galvanometer connect किया हुआ है. Okay. Now ये जो galvanometer के along the axis I am going to have a bar magnet. देखिए इसका north pole हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया. ठीक है. अब इस पे ये जो कॉइल है, ये कॉइल की तरफ इस बार मैग्नेट को मूव किया, उसके बाद मैंने इसको इसके पीछे की तरफ मूव किया. बार मैग्नेट को, the bar magnet is moving towards the coil and it's moving away from the coil. Okay. So इस कंडीशन में what happened is ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस पे it was showing a deflection. The galvanometer was showing a deflection. So actually what happened is हमारा जो coil जो था ना, ये जो coil है, इस coil से linked magnetic flux change हो गया. So we can say that the magnetic flux linked with the coil got changed. As a result of that, if the galvanometer showed the deflection, हमारा ये जो galvanometer है, the galvanometer that showed a deflection also. ठीक है. और deflection दिखाया, that means there was a current flowing. Okay, there was a current flowing. Fine. So हम इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, that is, देखिए, I was having a coil, isn't it, and there was a magnetic field linked with the coil. That means it was having a magnetic flux as well, isn't it? So there was a coil, उस coil से linked there was a magnetic flux. अब bar magnet मैंने move किया, that means the magnetic flux linked with the coil got changed. Okay, magnetic flux linked with the coil got changed. As a result of that, there was an EMF. There was an EMF, and मेरा जो circuit जो थे, that was closed. इसके वजह से there was an induced current also. There was an induced current also. Fine. So this phenomenon is known as electromagnetic induction. Okay, so how we define electromagnetic induction is that if we are having a closed coil, if I am having a closed coil, उस closed coil से associated magnetic flux में change करा रहा हूँ, इस closed coil से associated magnetic flux में change कराएंगे, and उस condition में हमारे जो coil है, इस coil में there will be an induced EMF, there will be an induced EMF,
ठीक है। एज a result of that हमारा the coil जो है, there is a closed coil. As a result of that there will be an induced current, and the phenomenon is known as electromagnetic induction. Okay, so that is electromagnetic induction basically. And अब हम डिस्कस करेंगे Faraday's experiment क्या है. Okay, Faraday's experiment. So we're going for Faraday's experiment. Faraday's experiment. Faraday's experiment, there are 3 experiments. उसमें सबसे पहला वाला experiment देखिए. I'm going to have a loop. ठीक है, इस loop के क्रॉस इस loop से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. The galvanometer, and देखिए, this is the axis of the loop, and this is a bar magnet. ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ. पहले इस बार मैग्नेट को कोयल की तरफ मूव कराया. ओके, उस टाइम ऑब्जर्वेशन ये था, व्हाट हैपेंड वाज, ये मेरा ये जो गैल्वेनोमीटर है, इट शोड ए डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाया. फाइन. अब मैंने क्या किया, इज द सेम अरेंजमेंट. देखिए, it's the same arrangement only. Same bar magnet, north and south. अब मैंने इसको पीछे की तरफ मूव करा रहा है, ठीक है, द बैकवर्ड डायरेक्शन. उस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन दिखाया ऑपोजिट डायरेक्शन. देखिए, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया. फाइन. उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए, सॉरी, ये देखिए गैल्वेनोमीटर का नॉर्मल पोजीशन है. फाइन. This is the axis, और see the change, ये साउथ है, ये नॉर्थ है. ओके, इसको मैंने इस तरफ मूव कराया. इंटरेस्टिंग थिंग वाज, ये जो डिफ्लेक्शन है ये राइट की तरफ, यानी कि ये दोनों मैच कर रहे हैं. ओके, ये दोनों मैच कर रहे हैं. सो यू कैन गेस व्हाट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट. सेम इज द अरेंजमेंट. देखिए, ये आपका कोयल में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, गैल्वेनोमीटर का नॉर्मल पोजीशन, ये आपका एक्सिस, देखिए, साउथ एंड नॉर्थ. साउथ पीछे की तरफ गया, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है ये लेफ्ट की तरफ. फाइन, यानी कि ये दोनों मैच कर, ये दोनों मैच कर. ओके, एंड the final setup of experiment number 1 is, once the velocity of bar magnet, the velocity of bar magnet was equal to 0, and once it was at rest, okay, there was no induced current.
there was no induced current. Are you getting me? So that was experiment number 1. Fine. Now we are going for experiment number 2. Experiment number 2 में experimental जो setup जो रहेगा, it will be the same only, but there will be a minor change. Minor change क्या है कि जो motion जो होंगे इस बार वो बार मैग्नेट का नहीं होगा, that is going to be the coil, यानी कि जो मूव करेंगे वो इस बार हमारा बार मैग्नेट मूव नहीं करेंगे, क्या मूव करेंगे, कोयल मूव करेंगे. ओके, सो देखिए इसका डायग्राम कैसे होंगे. सॉरी, ये देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसा. नॉर्थ साउथ, दिस इज द कॉइल. ठीक है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है ऐसे. फाइन. सो दिस इज द एक्सिस. हम क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को सबसे पहले इस तरफ मूव कराया. ओके, सो से द डिफ्लेक्शन of the galvanometer be towards left. ऐसा. अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए साउथ नॉर्थ, आपका कोयल हो गया. दिस इज द गैल्वेनोमीटर नॉर्मल पोजीशन. दिस इज द एक्सिस. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस कोयल को पीछे की तरफ लेके गए. कोयल जो है पीछे की तरफ मूव कर रहा है, मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस. इस टाइम पे डिफ्लेक्शन है, ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है, इसके बाद क्या अगला सेटअप क्या है. नेक्स्ट सेटअप में जो है देखिए बार मैग्नेट का पोलैरिटी रिवर्स. Here it's not this time, here it is south. देखिए this is the axis. अब कोयल देखिए ऐसे मैंने मूव किया and it was interesting to notice जो डिफ्लेक्शन है उल्टा प्रीवियस केस जैसे. देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं. नेक्स्ट देख सकते हैं आप, नॉर्थ साउथ, ये हमारा कॉइल, ये हमारा गैल्वेनोमीटर अभी नॉर्मल पोजीशन में. अब कॉइल को मैंने पीछे की तरफ मूव कराया. कॉइल जो पीछे की तरफ मूव हुआ है, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. फाइन. मींस जो इधर जो मैचिंग केस है, ये दोनों मैचिंग केस, these two are the same. okay, and the last one, जैसे हमारे पहला जो इससे पहला वाला जो केस एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो किया था, सिमिलरली इसमें भी once the coil was at rest, इधर हम कोयल को ही मूव कर रहे थे. so once the coil was at rest, once the coil is at rest, okay, induced current I is equal to 0, यानी कि no change in magnetic flux, no change in magnetic flux, no induced current, no induced EMF, so no induced current, so no induced current. Okay, so that was experiment number 2, and now we will go for experiment number 3. okay,
इसके लिए हमारे पास होंगे दो कोयल। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, कोयल नंबर 1, इस पे होंगे आपके गैल्वेनोमीटर कनेक्टर, ऐसे, ये देखिए ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर का एक्सेस, एंड हियर कम्स योर सेकंड कोयल, ठीक है। और इस पे आप देख सकते हैं बस एक सेल है, I'm having a cell like this. Initially इसका की जो है ओपन, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस की को करेंगे क्लोज, ठीक है। उस कंडीशन में से ये डिफ्लेक्शन दिखाया टुवर्ड्स लेफ्ट, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस की को करेंगे ओपन, उस कंडीशन में इसका जो डिफ्लेक्शन है ये हो गया टुवर्ड्स राइट, ठीक है। सो की मैंने क्लोज किया, उस टाइम इसमें डिफ्लेक्शन सेम कलर कोड मैंने दिया हुआ है, टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्शन दिखाया। जब मैंने की को ओपन किया, इसका जो डिफ्लेक्शन जो दिखाया वो दिखाया राइट की तरफ, ओके। सो ये जो डिफ्लेक्शन जो है दैट वाज जस्ट फॉर अ मोमेंट ओनली, दैट वाज जस्ट फॉर अ मोमेंट, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, जस्ट फॉर अ मोमेंट ओनली, ओके। यानी कि क्लोज किया उसके बाद डिफ्लेक्शन हो जाएंगे जीरो, ओके। ओपन किया उसके बाद भी डिफ्लेक्शन हो जाएंगे इमीडिएटली जीरो, फाइन। यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप उसको क्लोज्ड रखोगे या लॉन्ग टाइम के लिए आप उसको ओपन रखोगे तब भी डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा जीरो, फाइन। सो दिस वाज फैराडेज एक्सपेरिमेंट नंबर 3, फाइन। ये जो तीनों जो एक्सपेरिमेंट है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, सो फैराडेज का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है आप उसको इनटू ए सिंगल, उसमें आप देख सकते हैं समथिंग लाइक दिस, आप देख लीजिए, this was altogether into a single frame, okay. First one, this was the second one, this was the second one, fine, and here is the third one, तीन एक्सपेरिमेंट, फाइन। सो इसमें से हमारा कंक्लूजन क्या होगा, दैट हम देख सकते हैं व्हाट इज द कंक्लूजन आउट ऑफ दिस फैराडेज एक्सपेरिमेंट। देखिए कंक्लूजन, हियर कम्स द लास्ट टॉपिक, conclusion of Faraday's experiment. देखिए, so what the conclusion of Faraday's experiment is that, point number 1, okay, whenever we are having a flux change linked with any coil, that will result in an induced EMF, and if the circuit is closed, it will give an induced current, okay. So the first conclusion is that whenever we are having a flux change, whenever we are having a flux change linked with a closed loop, linked with a closed coil, we can say, it will result in an induced EMF and as a result induced current, okay. That is conclusion number 1, fine. And conclusion number 2 is that, fine, ये जो induced EMF का जो वैल्यू होगा, induced EMF का जो वैल्यू होंगे वो जो होंगे that will be directly proportional to the rate of change of flux, the rate of
change of flux, rate of change of flux. ये जो पार्ट है हम इसमें से कैसे कंक्लूड करेंगे, I can tell you. So for that I'm taking you to the 3 experiments. अब देखिए इसमें ये जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में what I'm going to do is इधर मैं एक वेरिएबल रेसिस्टर सेटअप कर रहा हूँ. I'm going to have a variable resistor like this. वेरिएबल रेसिस्टर है मेरे पास. So इस वेरिएबल रेसिस्टर से what I can do is आप उसको you keep it closed, fine, उसको लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज करिए. उसके बाद इस वेरिएबल रेसिस्टर का हेल्प से you can change the resistance. आप उसको इसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू आप उसको चेंज करा सकते हैं. सो जब आप इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेंगे ऑब्वियसली करंट का वैल्यू चेंज होगा, करंट का वैल्यू चेंज होंगे. So that will finally result in the magnetic flux, change in magnetic flux linked with this coil, this one, and as a result of that either deflection होंगे. Fine. Now di by dt बोले तो change in current, यानी कि रेसिस्टेंस चेंज करने की वजह से आप करंट का जो वेरिएशन करा रहे हैं. जब आप इसका di by dt का रेट बढ़ा दीजिए, रेट चेंज करिए in the sense you can change the resistance value at a higher rate and you can change the resistance value to lower rate also. So more the rate of change in current over here, more will be the deflection. यानी कि इधर जो di by जो dt का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थीटा का जो वैल्यू होंगे di by dt में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा. फाइन. कहने का मतलब इसमें हम करंट का जो वैल्यू है आई का वैल्यू इसमें जो चेंज करेंगे आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेंगे. मैग्नेटिक फ्लक्स उस पे जो बढ़ेगा तो इसके एसोसिएटेड, इस कोयल के एसोसिएटेड जो फ्लक्स जो होंगे, आई मीन फ्लक्स का जो वैल्यू है दैट विल बी चेंजिंग. फाइन. सो di by dt का वैल्यू चेंज होगा, फ्लक्स का रेट, फ्लक्स का वैल्यू चेंज होंगे. जो फ्लक्स रेट का जो चेंज का जो स्पीड के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, जो डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएंगे. कमिंग टू द सेकेंड वन, इस केसेस में इधर हम कैसे फ्लक्स चेंज क्रिएट कराएंगे, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड. ओके, दैट मीन्स जब स्पीड ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होंगे. फाइन. सिमिलरली इस वाला जो केस, जो पहला वाला जो केस है, इसमें भी देखिए इधर हमारा बार मैग्नेट का जो स्पीड है, मूव करने का जो स्पीड है, मोर इज द वैल्यू v का वैल्यू ज्यादा होगा, v इन द सेंस वेलोसिटी ऑफ द बार मैग्नेट, v का वैल्यू ज्यादा होंगे सो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा. फाइन. सो दैट्स व्हाट द कंक्लूजन ऑफ Faraday's experiment is. Back to that conclusion area. So that was the topic. So the conclusion is that finally the flux change linked with the coil will result in induced EMF, and if it is a closed coil it will finally give an induced current. Second one is that induced EMF जो होंगे that is directly proportional to the rate of change of flux होगा. Fine. So that was topic number 2.